in the previous lecture, both morning, afternoon, any student, you can ask right now. Any questions? चलें आगे चलें. Yes, sir. Clear, sir. Okay, so this is lecture 2 of analysis of algorithms course. In lecture 1, we discussed that hardware alone is not sufficient. Basically, a good hardware is a good thing, but due to increase in data, due to increase in input, the improvement in hardware is unable to catch up with the increase in data. And the reason is, इसको यानी आप यूं समझें कि आपने एक एल्गोरिथम या कोड डेवलप करना है जो वो तमाम डॉक्यूमेंट रिट्रीव करके लाएगा जिसमें एक स्ट्रिंग है, लेट्स से analysis of algorithms, let's say. So there is a string, let's say analysis, जो भी spelling होते हैं, analysis of algorithms. Let's say that's the string you want to search over the web, internet. So search it. Search it over the entire web. So what do you think? What will happen? So you want to, let's say you want to retrieve all the documents or all the comments or all the reviews or all the people name who like this, who like a document containing this string on Facebook, WhatsApp chat, bring all the chat in which this analysis of algorithm string was there. Now think about the amount of data you are working on. At the end of the day, it's a string matching. You want to match analysis of algorithm string with string. And think about, you have a document of strings, for example, you have a document, and let's say, assume that you have an access to all the documents, all the chats, all the Facebook database and everything. Let's say you have an access. So it has, I mean, this document has a lot of strings, or a big long one string, whatever you, no matter how you interpret this document, that's a string. And you want to search this substring in this string. So given a string, you want to find out whether it's a part of another string or not. And the other string can be very big. So there are very good algorithms for doing that, but think about, you have an algorithm that actually searches over window-based, or in this particular way, it matches analysis of algorithm with this particular string, and then it slides the string right by one character and then matches, and then it slides a character maybe with one character again right and matches, and so on. And maybe you want to bring the documents that contain this string many more times. Maybe you rank that document higher than the other documents. This is for one document. How many documents are there on the web? So think about the size of the input here. Think about the size of the input as all the characters in all the strings, in all the documents, in all the web chats, in all the Facebook comments, in all the reviews, in all the WhatsApp chats,
in all the books written so far, in all the newspapers, in all the articles? What's the amount of data you are working on? Are you getting my point? Yes, sir. So today, I mean, the input size you're working on is huge. And you may come up with, maybe for the size of the input over which the algorithm is going to perform a matching or search, the size of the input for today, maybe you come up with some fascinating hardware that do it quickly for today, but the size is going to be changed every second. Every second, new WhatsApp comments are there. I mean, new Facebook comments, reviews are there. New papers are being published. People are chatting on the web. New books are being written. Although the books are not written in seconds, but I mean, some characters, some keystrokes are there. So think about the keystrokes every second that are being played all over the world. They are making this data, they are making this input, they are increasing the input. Every second the input is changing, and it is growing. I mean, it is growing to a level that it is basically exploding. So after an hour, for example, after 2 hours, after 3 hours, the size of the input will be enormously different than the size. I mean, the size 3 hours earlier. So the solution is not to come up with hardware improvement consistently, because hardware improvement cannot catch up with the increase in the input. And that's the primary reason. Increase in the input size, that's the primary reason that basically suggests the improvement in the logic of the algorithm, to improve the code of the, I mean, to improve the algorithm rather than to improve the hardware. Because for large inputs, for very, very large inputs, if algorithm is not smart enough, if it is just a lazy thing, if it is improvable, for large inputs, you maybe are going into big troubles, because the number of basic instruction your algorithm will produce, as we saw in our previous lecture, the number of basic instructions can be so many that your very fast hardware will give up. Make sense? जी सर. And now think about, for example, video analysis. Think about that you want to search a video that has, for example, in which the people are smiling. Let's say you want to build a catalog on your web page, and you want to just capture all the video clips in which the people are smiling. Let's say you call that a smiling web page. You are going to build your own web page in which is really smiling. And what you do is, let's say you gather all the data of the people that are smiling, and let's say there is an algorithm. Let's say there is an algorithm. Let's say there is an algorithm that extracts a video clip given several video clips, extract a video clip given several video clips on
of a particular property, particular expression, let's say. So given a lot of video clips, let's say your algorithm can find out the clip 1, 2, 3, or so many clips that has a particular expression, let's say smiling expression. Now think about the data set you're working on. On single YouTube server, for example, every second there is an upload of more than 5 GBs every second. I mean, we are talking, and in this time period, 10 to 15 GB upload has happened on YouTube, and now it is more. So if your algorithm is not smart enough, it is not going to work tomorrow. It is not going to work, for example, after a month. And hardware will no longer be a solution. The data increase is so rapid. Actually, these days people use big data, the term big data, because the data is so large. And big data has its own complications, not just algorithmic, there are management applications, where management troubles, how to store that data, how to query that data, how to do a parallel processing, and so on. So this increase in data has actually revolutionized whole chain. And one of the key things is this algorithms, the searching, the computational algorithms on very large amount of data. So, and there are many other examples as well. For example, you want to, let's say on a YouTube server, you want to group all the videos in, let's say, to 10 or 20 similar groups. Let's say आपने 20 ग्रुप्स बनाने हैं सारी वीडियोस के, जो एक जैसी वीडियोस हैं वो एक ग्रुप में आ जाएं, फिर जो दूसरी किस्म की सिमिलैरिटी है वीडियोस के दरमियान, वो जो भी कोई सिमिलैरिटी होगी वो एक जैसी लगती होंगी, वो एक ग्रुप में आ जाएं, वो दूसरे. This, I mean, writing this kind of algorithm for grouping this on large amount of data, think about on YouTube server, is a mess. And if your algorithm is not smart enough, it's thrown away. It's thrown away. You have to save single bytes. You have to apply whatever logic you can apply to keep your algorithm working on the environment for very large amount of inputs. Make sense? जी sir. Yes, sir. And this increase in data, I mean, nobody can stop it. And improving hardware to stay compatible with the increase of data is not possible, not at all. So we need algorithms. We need faster algorithms. We need to revise our algorithms. I mean, we have to analyze our code. We have to improve our code eventually. Okay. Yes. Yes, sir. Yes sir. Great. सही आ रही है वीडियो, स्क्रीन नजर आ रही है, कोई इंटरप्शन तो नहीं हो रही बीच में? एवरीथिंग इज फाइन? Yes, sir. Everything is fine. Okay, great. So in our previous lecture, I showed you, if you remember, this particular code, if you remember, and those who have taken the lecture as a video lecture, they also have seen this code. And there we think that this input size, here we have 3,300,000. We think that an array of size 300,000 is very big. And on this particular scale, we compare two different algorithms. Remember that? One algorithm was having this cost. Another algorithm was having this particular cost. Both the algorithms were doing the same job, but one has a different logic, another one has a different logic. And we saw that on small inputs, when the input is small, one algorithm was performing very well, but as the input increases, the algorithm just become unmanageable as compared to the other algorithm. Yes? Yes, sir. Yes sir. And at that time, we just tested for
300,000 size of an array, for example. You can think of this as input size can be defined in various ways. For example, in the case of array, it's the number of cells in the array. In the case of linked list, it is the number of nodes in the linked list. In case of matrix, it's total number of entries in the matrix. In case of graph, it is total number of nodes as well as the edges of the graph. I mean, there is a way to define the size of the input on which the algorithm has to perform. Okay. So, and today, again, I'm saying that the key goal of analysis of algorithms is to analyze your algorithm for large inputs. Okay. Okay, sir. Now my question Okay, sir. is, how large? Like in our previous example, we saw the large at that case was this thing. How large? It's okay to design an algorithm that runs faster on large inputs. Maybe it does not run faster on small inputs. That's fine. For small inputs, maybe we don't care. For small inputs, maybe the runtime of the algorithm doesn't matter, maybe. Or maybe for small inputs, we have other algorithms that are faster on small inputs and may not run very good on large inputs. For small inputs, we don't care what happens. All we care is about the large inputs. Oh, ये large के spelling सही है? E आता है end पे? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ठीक है, ये अक्सर मैं स्पेलिंग गलत लिखा करूंगा तो आप सही कर दीजिएगा, मेरी अंग्रेजी बहुत अलग किस्म की है तो मुझे बता दिया करें, अक्सर ही कोई और ही ना मतलब निकला है किसी लफ्ज का, इसलिए बता दिया करें, ठीक है। सो मैं बता ही रहा था द की कंसर्न इज लार्ज इनपुट्स। सो इसको ऐसे समझे, आप किसी बंदे के पास जाते हैं, वो कहता है, आप उससे पूछते हैं यार क्या कर रहे हो, तो वो कह रहा है यार मैं एक एल्गोरिथम डिजाइन कर रहा हूँ। तो उससे कोई पूछता है यार तुम किस काम के लिए, तो वो कहता है यार मैंने कोई रिकॉर्ड्स हैं वो सॉर्ट करने हैं। तो कहता है यार तुमने पिछले दिनों तो एल्गोरिथम लिखा था, वो रिकॉर्ड सॉर्ट करता है बड़ा जबरदस्त किस्म का, तो अब क्या मसला हो गया? यार वो अब इनपुट बड़ी ज्यादा हो गई है और वो सही चलता नहीं है, तो मैं लार्ज इनपुट्स के लिए लिख रहा हूँ जो लार्ज इनपुट्स के लिए एफिशिएंट चले। तो वो पूछता है कितनी लार्ज इनपुट, मतलब कितनी अब आ गई है? तो वो कहता है यार आज के दिन तक तो मैंने देखा है कि पर डे जो रिकॉर्ड आ रहे हैं ना, वो को तकरीबन 50 लाख के करीब पर डे रिकॉर्ड आ रहे हैं। तो मैं 50 लाख के लिए लिखने लगा हूँ कि जो 50 लाख अगर इनपुट आए ना तो वो उस पर बहुत अच्छा चले। तो वो दूसरा कहता है अच्छा वो तो मुझे पता चला आपकी कंपनी वाले तो 2-3 और मुल्कों में भी अपनी फ्रेंचाइज लॉन्च कर रहे हैं, वहां से भी डेटा इधर ही प्रोसेस होना है, तो कल को ये रिकॉर्ड्स तो 50 लाख से भी बढ़ जाने हैं। वो कहता है यार अच्छा, फिर मैं इस तरह करता हूँ कि मैं ना 1.5 करोड़ के लिए लिख लेता हूँ, 1.5 करोड़ पे फोकस करता हूँ और उस पर लिखता हूँ। The question is how large, when you are designing your input, how large the input is. That is in your mind when you are designing an algorithm. You're making your algorithm fast. You're trying to make your algorithm fast for large inputs. But how large? What is the number that is there in your mind that the input will be this large and so I should be ready for this? How large? जी
सर डिपेंड करता है ना हम किस किस्म का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अभी आपने कहा कि पर डे 50 लाख आ रहे हैं, तो हमारे माइंड में एक एस्टिमेट तो है ना। तो अब जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरे माइंड में ये एस्टिमेट है कि 50 लाख पर डे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, तो मैं 1 करोड़ के लिए बना लूंगी ताकि ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए। यानी प्रॉब्लम साइज पर ही डिपेंड कर रहा है ना, estimated problem size. So what do you think? What should be the problem size again? The input size. आपके ज़हन में कितना है? When you are, for example, you have an algorithm, let's say algorithm A for a task whose running time on n inputs, that's a time, running time t, on n inputs. The running time is, let's say, n square plus 4n minus 7. That's the running time, total running time of algorithm A, depending upon n inputs on a particular machine and a particular hardware and stuff like that. Okay. And on the same machine or a particular hardware on the same setup, maybe you have another algorithm whose running time is, that does the same stuff, and the running time is n square minus 4n plus 8. And let's say you have a third algorithm, C, whose running time is 400n raised to the power 1.7 plus n plus 1000, let's say. So these are the running times with respect to the input size. If you change the input size, your total running time will be different. Let's say you have calculated these. Let's say these are, let's say for your algorithm, let's say these are the total number of instructions, basic instructions that are produced. Well, the basic instructions might be adding two numbers, comparing two numbers, subtracting two numbers, dividing two numbers, and these kind of operations. Whatever code you run up, whatever code you write, eventually it comes up to be the total number of basic instructions that are being executed on a computer. Now, depending upon the number of basic instructions, now you can change, you can deploy a better hardware that each instruction run faster. That's fine. But these are the total number of basic instructions. Let's say algorithm A has these many basic instructions, algorithm B has these many basic instructions, and algorithm C has these many basic instructions, regardless of the hardware and everything. These are the instructions that are going to be computed, that are going to be executed on any hardware. Maybe you choose a better hardware to run these many instructions faster, but these are the instructions that has to be executed. Now, if you have to choose from A, B, and C, which one will you choose? That's my question. Sir, algorithm C. Why? The third one. Because, sir, the degree of this equation is less than above both. Okay, so you're saying that this particular factor is smaller than this factor and that factor. Yes? Yes, sir. So why you are ignoring the rest of the factors? For example, why you are ignoring this constant 400? This constant is 1, this is 1. Why you are ignoring that? Why you are ignoring these editing factors, these ones? Why you just focus on these things? I mean, are you saying this 400 doesn't matter? Sir, it does matter, but for small inputs, maybe algorithm A and B work better than the C. But for larger input, algorithm C will work better than above both. So how to design, so that suggests me the following thing. Let's have
a criteria for comparing the time of two algorithms let's have a criteria for comparison of two algorithms. Let's say we have two algorithms, we have the running time of those. We must have a criteria to compare them. How to compare them to decide which one is better. Make sense? Yes, sir. Yes, sir. So there are several criteria, but let me give you one criteria that is most commonly adopted and has very powerful theoretical foundations. That is called a ratio. Ratio. That's a criteria, ratio. Ratio means, let's say you have T1n and you have another algorithm, T2n. You compute their ratio. So T1n, and it depends whether you place T1 on top or T2 on top. Just compute their ratio. One of them is numerator, another one, whatever is, that is denominator. So you can have, for example, T2 over T1, that doesn't matter. But compute their ratio. Okay? Yes? Yes, sir. जी सर. Now think about this ratio at the end of the day. For any number n, this ratio is also a number. Okay? T1 for a particular value of n, let's say 100, is a number. Yes? Yes? Yes, sir. So how many number of instructions are there for input size 100? T2 is also a number. Okay? Okay, sir. So T100 over T200 is also a number. Okay? Okay, sir. So this ratio is a number. And we can decide based on this number. We can decide based on this number. So let's have a criteria for comparing two functions, comparing two algorithms with respect to the time, as computing the ratio of their times as a number, and let's decide based on this number what will happen. Make sense? Yes, sir. So for example, T1n over T2n, which basically in our example is n square plus 4n minus 7 over n square minus 4n That's it. plus 8. Let's compare them. Let's compute this ratio. But the problem is, to compute this ratio, we must have a number n. We must have a value of n. What should be n? Until we know n, we cannot have a final number. Yes? Yes, sir. Yes, sir. But even if we don't have n, we can proceed. We can do as much algebra as we can. For example, if we take n square common from the top, we get 1 plus 4 over
n minus 7 over n square. Yes? Yes. And if we take n square common from the bottom, we can get 1 minus 4 over n plus 8 over n square. Yes? Yes, sir. And we can cancel these n squares out. And even if we do not know the exact value of n, we can somehow reason on this ratio. And the reason is the following. As you can see, if n grows bigger and bigger, if the input size grows bigger and bigger, this factor and this factor, they will become smaller and smaller. Yes? Yes, sir. Yes, sir. So for large n, these two factors are nearly negligible. Yes? For large n. Yes. And also these for even further larger n, also these factors are negligible. Yes, sir. So in this case, the ratio is 1. constant or 1 for large n. Make sense? Yes, sir. And we can say T1 and T2, I mean, none of them is bigger than the other, because if one of them is bigger than the other, then you cannot get a number that is just 1 or a constant as n grows. Make sense? Yes, sir. And the reason is the following. Let me give you further insight into it. Obviously, T1 is time for n inputs. As n grows, T1n grows. In a certain pattern, it grows. Yes? Yes, Yes. sir. Yes, sir. And T2, if you think, is also time for n inputs. So as n increases, T2 also increases in a particular pattern. But maybe the rate of increase of T2 is smaller than the rate of increase of T1. Both are increasing. जाहिर है जब इनपुट साइज ज्यादा होगा तो दोनों एल्गोरिथम ज्यादा टाइम लेंगे डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट, लेकिन हो सकता है कि with respect to the change, with respect to the increase in the input size, हो सकता है एक एल्गोरिथम थोड़ा जंप, एक एल्गोरिथम का टाइम थोड़ा इंक्रीज हो दूसरे एल्गोरिथम के टाइम के लिहाज से. So basically what this ratio is computing is the change of T1 with respect to the change in T2. So that's a very good way of comparing them. If the change in T1 with respect to the change in T2 as n grows, if that stays fixed, that means both are changing in equal rates. So जितना change एक में आ रहा है दूसरे में भी जैसे जैसे n बढ़ता जा रहा है दूसरे में भी जो टाइम का चेंज का फैक्टर आ रहा है, यानी कितना टाइम T1 ले रहा है कितना T2 ले रहा है, that factor is the same, that ratio is the same, which means one of them is not better than the other for large inputs. Yes? Yes, sir. Yes. If on the other hand, T1n over T2n, as n grows bigger and bigger, if this ratio for different values of n, if this ratio increases, that means T1 is growing more rapidly than T2 as n increases. मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर. Yes, sir. Yes, sir. जैसे जैसे n बढ़ता है, अगर T1 तेजी से बढ़े और T1 स्लो बढ़े
तो T1 over T2 जो है वो इवेंचुअली ये रेशियो जो है ये n के लिहाज से बढ़ना शुरू हो जाएगी, बहुत बड़ी होना शुरू हो जाएगी, ये कांस्टेंट नहीं रहेगी, n की वैल्यू पे डिपेंडेंट हो जाएगी ये रेशियो खुद। जी सर। इस केस में तो आप देखेंगे ना, n की जो भी वैल्यू हो द रेशियो इज कांस्टेंट, इज फिक्स्ड। n चाहे बड़ा करें चाहे छोटा करें, the ratio is a fixed number, which means one of the time functions is not rapid than the other one. The ratio stays fixed for large n. Yes? जी Yes, सर। sir. Yes, sir. But if for large n, this ratio actually explodes, becomes a bigger number. And when you increase the n, the ratio becomes further bigger number than the previous one. Then T1 is growing rapidly. Then T2 is better. Yes? Yes, sir. And if over time, n, over the input size n, if the ratio is shrinking down, so it was some number, then n increases, the ratio becomes smaller number, then n increases, the ratio becomes further smaller number and shrinks to a very small number, that means T1 is better. T2 is growing rapidly now. Yes? Yes, sir. Yes, sir. So if T1n over T2n is constant for large n, then T1n is equivalent to T2n. Both are roughly the same. Both algorithms, none of them is better than the other, by and large. Okay? Yes, sir. जी सर। Yes, sir. Else if T1n over T2n is exploding for large n. Exploding means becoming a very big number. Then T2n is smaller than T1n, and so this is better. This is much better. Yes? Yes, sir. And else, if T1n over T2n is shrinking for large n, then T1n is smaller than T2n because T2n is growing rapidly and the overall ratio is being shrinked. And the boxed one is better in that case. So that's our criteria for comparing two algorithms, comparing the times of two algorithms with respect to the input size. So far, so good? Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर। सर ये जो थर्ड वाला आपने पॉइंट लिखा है, इसमें यही है ना कि T1 इस केस में बेस्ट हो जाएगा। T1 हाँ जी बेस्ट है, T1 छोटा रहेगा ना। ठीक है सर। देखें जो एल्गोरिथम कम टाइम लगाएगा वो बेहतर है। ओके सर। Okay, so by the way, is everything fine? Fine till now? Understanding things? Yes, sir. It's all good. Yes, sir. Yes, sir.
Why somewhat? If you have any confusions, please ask questions. Don't hesitate. Ask questions. होगा ये कि हर नया लेक्चर जो है वो पिछले लेक्चर पे बिल्ड होगा, तो अगर अभी आपके लेक्चर में लूप होल रह जाएंगे तो वो फिर कंटिन्यू होते जाएंगे और तीसरे चौथे छठे सातवें लेक्चर के बाद आपको कुछ समझ नहीं आ रही होगी। इसलिए बेहतर है कि जो चीजें अभी आपको समझ नहीं आ रही वो अभी स्टॉप करें और अभी रोकें और मुझे समझें वो अभी अच्छी तरह से क्रिस्टल क्लियर करके फिर आगे चलें। सर ठीक ये है, एक्सप्लोडिंग वाली बात नहीं अच्छे से समझ गई क्लियर में। ठीक है। देखें, मिसाल ले लेते हैं, क्यों ना मैं आपको पाइथन में श्रिंकिंग और एक्सप्लोडिंग दिखाऊं? व्हाई नॉट? दिखाऊं? Yes, sir. लेट्स सी थिंग्स इन पाइथन। बजाय इसके कि मैं यहाँ पे लिखूं, लेट मी टाइप some stuff in Python in front of you. So tell me T1. So T1 बताएं क्या है? Let's say n square plus Plus 4n. plus. आपको स्क्रीन नजर आ रही है? Yes, sir. Plus 4n Yes, sir. -7. जी सर. -7. That's okay. ठीक है? Oh, what's that? ठीक है जी? जी सर. Yes, sir. जी सर. Let's define T2. N square minus 4n Plus 8. plus 8. That's T2. And let's now have our loop, great loop with us. And let's plot the ratio. Let's say we go again from, let's say we have this range, and let's compute the ratio. Let's say ratio on as X, simple. So rather than A append, B append, we append R dot append T1 n divided by T2 n. Now, as n increases, you keep the record of the ratios. Make sense? Yes? जी सर. Yes, sir. Okay, R, and this is R. Let me define an X. So what are you seeing here? Let me reduce the ratio. So let me reduce the capital N. Let's say capital N is the large number that we are really moving.
Let me do this as 1000 large n. What you can see is in the start, the ratio was bigger, which means T1 was taking more time than T2. It looks like that for small inputs, this ratio was a large number. Okay? Yes? जी सर. Yes, sir. But as the n increases, the ratio actually decreases, and the ratio is not increasing or decreasing. It finally is getting stable. Yes? Yes sir. Yes, sir. And even if you and if you have, for example, very large inputs, this becomes very much stable like a constant. Now if n increases, after this particular point, if n increases and keep on increasing, then the growth in T1 and the growth in T2 is the same, and their ratio is canceling that factor, which means for large inputs, whether you use T1 or whether you use T2, it doesn't matter, because one of them is not growing faster than the other one. If one of them is growing faster than the other one, as n increases, as the input increases, then this ratio will no longer be constant. Either it will be shrinking or it is exploding. Make sense? सर ये बात समझनी है, ये जो स्ट्रेट लाइन गई है ये तो एक्सपोनेंशियली एक्सीड कर गया है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो तो शुरू से ही एक कांस्टेंट ही रहा है. तो आपने कहा ये दोनों यानी कि एक दूसरे के उसको इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं और दोनों यानी एफिशिएंट हैं, तो ये कैसे? मुझे आपका सवाल समझ सही तरह से नहीं आया. मैं सिर्फ ये बता देता हूँ कि स्टार्ट में अगर आप वैल्यू देखें ना आर की, सो स्टार्ट में अगर आप वैल्यू देखें आर की, फॉर एग्जांपल आर की मैं कुछ वैल्यूज आपको दिखाता हूँ. पहली 10 वैल्यूज दिखाता हूँ मैं आपको. So the ratio was like 1.8, then 1.0, then 1.0, then eventually it is going to 1 very quickly, very quickly. अगर मैं थोड़ा सा इन फंक्शंस की डेफिनेशन चेंज कर दूं ना, मिसाल के तौर पे इसको मैं लेट से 100 से मल्टीप्लाई कर दूं या 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अब आप ये जो कांस्टेंट की तरफ इसका पहुंचना है ना, ये इतना रैपिड नहीं होगा. समझ आ रही है? थोड़ा टाइम लेगा एंड देन इट विल रीच टू अ कांस्टेंट. लेट्स चेक दैट. You see it is this much, and if you increase, but still if you increase the if you increase the input size at for large n, T1 over T2 is the same, and if you jump, अगर आप n input size को थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो T1 में जितना चेंज आएगा T2 में जितना चेंज आएगा, that change is same. अब अगर मैं आपको ये दिखाऊं, तो पहले आपने देखा था रेशो 1 से शुरू हो रही थी, अब 10 से शुरू हो रही है. सही है? जी सर. लेकिन अगर मैं आपको इसकी आखिरी कुछ दिखाऊं, लेट्स से आखिरी वैल्यू दिखाऊं इस अरे के अंदर, ओह दैट्स -1 इज ओ ये 10 पे ही है अभी तक, ये 1 पे क्यों नहीं? ओह I mean, ये 10 पे रहेगी, लेकिन it is a constant. It will stay a constant. So it reaches 10 and then it stays at 10. Make sense? जी सर. अब मैं आपको कुछ और फंक्शंस लेट्स से मैं दिखाता हूं कि उसमें क्या होगा. मिसाल के तौर पे अगर आपका फंक्शन जो है ये पहले वाला ये हो n स्क्वायर, और बाय द वे ये n स्क्वायर, ये वाली टर्म्स चाहे हो चाहे ना हो, आप टेस्ट कर लीजिएगा, इट विल रीच टू कांस्टेंट वेरी क्विकली. और थोड़ी देर बाद मैं आपको मैथमेटिकली भी बताऊंगा ऐसा क्यों होता है. ठीक है जी? बट लेट्स चेंज अ फंक्शन टू हैव n स्क्वायर प्लस n
into, let's say, n, one other n. Okay, let's say that's our function t1, and the function t2 is n squared minus 4n in that. It looks like that the t1 and t2 will explode, but let's see how will it proceed. Make sense? जी सर. Let's see. Let's see it for small windows. Oh, you can see it is going this way. Okay, from the very beginning, it is going this way from the very beginning. But if I multiply, for example, this smaller thing with 1,000, it will still explode. Yes. And if I, for example, take this larger, it's going like that. The ratio is going like that. Clear? Yes, sir. Yeah, so that's the ratio. If you want to see, for example, more impacts, you can have n multiplied with this one. ये एक मिनट होल्ड कीजिएगा, कोई स्टूडेंट आए, मैं उनसे जरा मिल लूं. So you can play with this. Now the curve is not linear. It's going like that. Yes, exploding more rapidly. जी sir. And similarly, you can see the impact of shrinking. So like as you move in the input, the ratio becomes larger and larger. Obviously, we have seen the input till this point, but if you move further than that, you can see that this curve will go up and up and up. And similarly, you can check the different nature. For example, the nature like drowning or shrinking. Even if you, for example, have a very big number multiplied here, let's say this number, you will still check that it will shrink. And it will shrink to 0. आप देख रहे होंगे कि ये भी तो कांस्टेंट ही लग रहा है. ये कांस्टेंट नहीं है, ये 0 पे चला गया. यानी it is not a non-zero constant. इसको यूं समझ लें. चूंकि दोनों ही टाइम फंक्शन है, दोनों की वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव हैं, तो जो मिनिमम नंबर आना था वो 0 ही आना था, और ये 0 पे पहुंच गया. If I just show you that r minus 1, it's like 0.1. Okay? Yes? Yes. Yes. And if I do this for more inputs, ये 0.1 से भी गालिबन नीचे चला जाएगा. 0.01. Make sense? जी सर. So, I mean, this ratio is a very good test to check कि दो functions जो हैं, how they are behaving. लेकिन यहाँ पे भी देखें ना, हमने एक particular input तक check किया कि यार input जब grow करते 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 10 लाख या 10 करोड़ तक चली गई, तो ये function grow कर रहा है, दूसरा shrink कर रहा है. लेकिन हमने जो input size अभी मैंने discuss किए थे start में, those input sizes are way different than, or maybe larger than, the one we are coding here in Python. So what do you suggest? How can we implement the theoretical concept without computers? I mean, we are not going to run the program we are not going to run a program to test the efficiency of another program. We are going to analyze that without programming. And that might be very quick and much more general and abstract. So what do we mean by large N? What do you think? We have to evaluate this ratio for large N.
And then based on the result of this ratio for large n, we have to decide which one of them is better than the other. But the question is, what do we mean by large n? Mathematically, what is large n? Yes. जी बताएं। सर मैक्सिमम इनपुट साइज जितना हो सकता है। तो मैक्सिमम इनपुट साइज कितना हो सकता है? जैसे सर हमारा जो भी हार्डवेयर है उसमें कुछ मैक्सिमम इनपुट साइज होगा कि इतनी स्टोरेज हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, तो उसके लिहाज से। तो कल को जैसे पहले 32 बिट सिस्टम थे, उनकी कोई एक लिमिट थी, अब 64 बिट सिस्टम आ गया, उनकी कोई लिमिट है। कल को 128 बिट सिस्टम आ जाएंगे, उनकी कोई लिमिट होगी। कल को कोई और टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो हार्डवेयर स्पेसिफिक तो हमने रहना ही नहीं है ना। हाउ टू डिफाइन लार्ज एन। और वैसे भी लिंक लिस्ट आपने बनानी है तो आप जितनी मर्जी बड़ी बना लें, डेटा स्टोर होना है ना। लिंक लिस्ट है, उसकी सूरत में डेटा स्टोर होना है। डेटा किसी एक हार्ड डिस्क में स्टोर होना जरूरी तो नहीं है, किसी भी जगह पे स्टोर हुआ पड़ा होगा। आपने उस पर एल्गोरिथम चलाना है, तो वो इनपुट साइज कितना है, ठीक है ना। सर हमारा लार्ज एन वो होगा जहाँ पर हमारा एल्गो सेम ग्राफ देना स्टार्ट करेगा। जैसे आपने अभी ये ड्रॉ किया था ग्राफ, तो उसमें एक ऐसा पॉइंट आया था जहाँ पर हमारे ग्राफ ने कांस्टेंट रिजल्ट देना शुरू कर दिया था कि कोई भी वैल्यू हो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट रहेगी। तो बेसिकली आई थिंक हमारा वो लार्ज एन वो वाला पॉइंट होगा। नहीं, हमें तो नहीं पता। हम तो एल्गो इंप्रूव करना चाह रहे हैं, अपना एल्गोरिथम इंप्रूव करना चाह रहे हैं, और इस तरह के ग्राफ्स हम थोड़ी डिजाइन करेंगे। एन की एक एक वैल्यू लेके हम थोड़ी चेक करते रहेंगे कि एन की इस वैल्यू पे रेशो क्या है। ये रेशो हम डिफरेंट वैल्यूज पे थोड़ी कंप्यूट करेंगे, बहुत ज्यादा वैल्यूज पे कंप्यूट करनी पड़ेंगी। नो, और ये कांस्टेंट होना जरूरी भी नहीं है। अब बढ़ता जाएगा तो बढ़ता जाएगा, श्रिंक होता जाएगा तो श्रिंक होता जाएगा। असल में मसला ये कि एल्गो की लॉजिक के मुताबिक ना हमें ये भी नहीं पता कि एक एल्गोरिथम की रेशो अगर पहले कम हो रही थी, फिर बढ़ना शुरू हो गई, फिर जाके फिर कम होना शुरू हो जाए और फिर बढ़ना शुरू हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो हमें नहीं पता वो कौन सा पॉइंट है जिसके बाद हम लेंगे कि ये वाकई स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रही है, या इसके बाद ये श्रिंक नहीं होगी। वो पॉइंट कहां पे आएगा इनपुट में, वी डू नॉट नो। प्रोग्राम की लॉजिक है, लॉजिक हो सकती है ऐसी हो कि इतने इनपुट पे ये वाला एफिशिएंट चलेगा, फिर इतना इनपुट आएगी तो इसका डेटा स्ट्रक्चर इस तरह का कि दूसरा एफिशिएंट हो जाएगा। लेकिन इनपुट जब इस पॉइंट से इंक्रीज करेगी, फिर तीसरा वो पहले वाला फिर एफिशिएंट हो जाएगा। आई मीन वी डू नॉट नो। जो भी फाइनाइट पॉइंट हम सोचेंगे कि ये पॉइंट हमारा लार्ज है, उसके बाद बिहेवियर क्या होगा, वी डू नॉट नो। और हम कैसे ये मान लें कि उससे बड़ी इनपुट कभी भी नहीं आएगी, जो भी हम पॉइंट सोचते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। सर फिर इस तरह तो हम कभी भी कोई सोल्यूशन अडॉप्ट ही नहीं कर पाएंगे। हम ये सोचते रहते हैं फिर कि इनपुट साइज इंक्रीज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सर फिर एक पॉसिबिलिटी है कि हम अपने इनपुट साइज के डबल के हिसाब से उसका एल्गोरिथम लिख लें। यानी अगर 25 से इनपुट के लिए लिखा है तो 50 के लिए लिख लें। यार सॉरी, मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी, माजरत। वो कोई दरवाजा नॉक कर रहा था तो मैं उनको दोबारा से प्लीज बताएंगे, दोबारा से बताएंगे। मैंने कहा सर अगर हमने पहले 25 इनपुट के लिए एक एल्गोरिथम लिखा है तो फिर हम उससे डबल कर लेंगे, यही हम कर सकते हैं एट द टाइम। तो फिर जैसे फर्दर करना पड़ेगा फिर हम उससे दोबारा डबल करते जाएंगे, क्योंकि एट टाइम तो नहीं हमें पता ना कि लार्ज इनपुट क्या हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम डबल कर लेंगे, तो यही एक प्रॉब्लम है, हम इससे बच सकते हैं। देखें आप, इसका मतलब है आप पहले प्रोग्राम लिखेंगे, उसका रनिंग टाइम नोट करेंगे, दूसरे प्रोग्राम पे डिफरेंट लार्ज इनपुट पे उसका रनिंग टाइम नोट करेंगे, फिर रेशो लेंगे। फिर अब देखें, अब एक प्रोग्राम है वो है इतना इनएफिशिएंट कि वो एक दफा रन होने में 40 दिन ले जाता है।
तो अब 40 दिन बाद देखेंगे, अच्छा मेरी अगर इनपुट थी 10 लाख तो 40 दिन में चला, तो दूसरा जो है वो 50 दिन में चला, तो इसका मतलब है इनपुट ये, इसके लिए तो रेशो ये बनेगी। अच्छा मैं अब इनपुट जो है ना वो 10 लाख की जगह 1 करोड़ करके दोनों को चलाता हूँ, तो आप तो बैठे रहेंगे। यू डोंट हैव टू रन द प्रोग्राम एंड यू हैव टू एनालाइज इट, दैट्स अ स्किल। ये रेशो कंप्यूट करें विदाउट मेकिंग दोज ग्राफ्स। सर फिर हम n को इन्फिनिटी कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि n तो अपनी मर्जी से जब मर्जी इंक्रीज कर जाएगा, इसके अलावा तो कोई सोल्यूशन नहीं है। Yeah, exactly, that's the solution. So you have सर to डायरेक्ट को लिखेंगे ना। you have to compute this ratio for large n, and the only way to write that is the n is as big as infinity. Make sense? यस जी सर। सर। और आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कैलकुलस नहीं पढ़ी हुई या इन्फिनिटी का उनको नहीं पता, या अगर हैं तो मुझे बता दें, मैं इस पे थोड़ी सी बहस कर लेता हूँ। और अगर आपको क्लियर है व्हाट डू वी मीन बाय इन्फिनिटी एंड व्हाट डू वी मीन बाय लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, देन मैं जरा क्विकली आगे चला जाता हूँ। आप मुझे बताएं कि आर यू फेमिलियर विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स? इफ एनीबडी इज नॉट फेमिलियर, आई कैन गिव अ रिफ्रेशर। सर सब स्टूडेंट्स ने कैलकुलस नहीं पढ़ी होगी, तो आप एक बार बता दें। ओके, सो फाइन, ठीक है, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। सो लेट्स से आपका एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और ये फंक्शन है 1 ओवर लेट्स से 20 minus x. That's your function. Okay? जी सर। जी सर। Yes, sir. Which mean the value of this function for different x, if I take x1, the value will be 1 over 19. Yes? जी सर। If I take -1, the value will be 1 over 21. Yes? Whatever the domain of x is. जी सर। मैं अभी जनरल मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, ये मैं x माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, रियल नंबर कंटिन्यूअस भी हो सकता है, कुछ भी। ओके, जी सर। सो यू कैन कंप्यूट दिस वैल्यू ऑफ x फॉर एनी नंबर, बट व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फंक्शन फॉर 20? इन्फिनिटी। What is the value of the function at 20? Exactly 20. सर इन्फिनिटी। जो कि इन्फिनिटी होगा। Infinity? जी सर। Infinity means, what do we mean by infinity? What do we mean by infinity? सर 1/0 इसका आंसर आएगा, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे इन्फिनिटी कहेंगे। Infinity is 1 over 0? यस सर। Any number divided by the 0. So infinity is, you can say, x over 0? जी सर। Yes, sir. Or y over 0 or whatever. No. This is not infinity. So what's infinity? Why this is not infinity? Well, what do you think if you have 15 over 5? That means the answer is 3. And that means
That means that when you multiply this 3 with this 5, you will get 15 again. Okay? Yes, sir. And further, you are saying that the result of this ratio is a number because it is multipliable. Yes? जी sir. So if 1 is a number, 0 is a number, and you say, okay, 1 over 0 is something with some symbol, then you implicitly are claiming that this something is a number. When that will be multiplied with 0, you will get a 1 back, which is not possible. Such a number does not exist. Okay? जी sir. एक मिनट होल्ड कीजिएगा, ये कोई गेस्ट आए, मैं उनको जरा मिल लूं. जस्ट होल्ड ऑन. जी यार, ये मैं ऑफिस में बैठा हूं, तो फिर कोई ना कोई क्लास के दौरान जाहिर है वो कोई आ जाते हैं, तो उनको मना तो नहीं किया जाता, वो फिर इसलिए बीच में इंटरप्शन आ जाती है. एनीवेज, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट इंफिनिटी, and that's a complicated concept, but 1 over 0 is not an infinity. 1 over 0, I mean, you can say 1 over 0 is not infinity once you have defined infinity. What is infinity? If you have some definition of infinity, then you can check, okay, 1 over 0 falls under that definition or not. But if you think of infinity as some number, very large number, then 1 over 0 is not a number. It's not a number at all. If that's a number, then multiplying with 0 should result 1, which is not possible for any number. Make sense? सर समझ नहीं आ रही है इन्फिनिटी वाली बात. समझ नहीं आ रही? जी सर, इन्फिनिटी वाली बात जो आप बता रहे हैं ना. So what I'm saying is 1 over 0 is not a number. 1 over 0 is not a number. जी? Undefined है ये. हाँ जी. Then you may ask, what is 1 over 0? I will say, nobody knows. So it is not defined yet. So this is undefined. Nobody knows what it is. Make sense? जी सर.
infinity, you will ask, what is infinity? I will say, something very large. Okay? जी सर. Then the same person can ask, how much large? I mean, when should we call something as infinity? After that, it stays infinity. The answer is nobody knows. So, infinity is also undefined. Make sense? Yes. जी सर. But that does not mean 1 over 0 is infinity. 1 over 0 is something. Nobody knows what that is. Infinity is something very big, but how large it is, nobody knows. That's also undefined. But the two, 1 over 0 and infinity, they may not have any connection at all. Make sense? जी सर. जी सर. So now the question is, what is the answer of, what's the result of the function? What's the output of the function at 20? The answer is nobody knows. Undefined. Okay? जी सर. Okay. Now, let's say you are building a system, you're building a machine, and that machine, by the way, if you're not getting these concepts, please ask me. I'm trying to explain these concepts in very layman and simple terms from my side. If they're still complicated, please ask me so that I can change some method and stuff. If they are understandable, you're getting my point, then I should move on. Is that okay, or you're not getting any point? जी सर. सर यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर 1 over 0 आ जाता है तो हम इसको infinity नहीं कह सकते, ये undefined है. And infinity के बारे में nobody knows. किसी को नहीं पता, ये कोई भी big number हो सकता है. नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. I mean, okay? Okay सर. अब मेरा अगला सवाल ये है कि फर्ज करें आप एक सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, कोई एक मशीन बना रहे हैं और वो मशीन वर्क करती है इंटरनली. ये फंक्शन पहले उस मशीन पे कोई ऊपर से कोई 2-3 बटन प्रेस करता है. वो जो बटन होते हैं वो फाइनली एक नंबर बनता है x, डिपेंडिंग अपॉन कि उसने कौन से बटन प्रेस किए हैं, और उस x के ऊपर ये फंक्शन अप्लाई होता है और जो जवाब आता है उसके लिहाज से वो मशीन चलती है. वो पता नहीं कपड़े धोती है या आटा गूंथती है या क्या करती है, वो मशीन की कोई फंक्शनैलिटी है. सही है? जी सर. अच्छा, अब आपने वो मशीन बनानी है, यानी योर गोल इज टू बिल्ड दैट मशीन. सो बटन्स के कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे भी हैं जिसमें x की वैल्यू 20 आ जाए, तो उस केस में ये फंक्शन तो कोई जवाब ही नहीं देगा. लेकिन वो मशीन आपने मार्केट में लेके जानी है. व्हाट वुड यू डू if the function does not operate on 20? What's the best thing that you can do? हम ऐसे कॉम्बिनेशंस ही नहीं बनाएंगे जिससे 20 बन सकता हो. सॉरी, दोबारा बताएं. सर मैं ये कह रही हूँ, हम ऐसे बटन्स के कॉम्बिनेशंस ही नहीं रखेंगे जिससे 20 बन सकता हो. एक पॉसिबिलिटी ये है. दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो बटन्स आपने जो लगाए हैं 50 या 60 या 10 बटन्स, अगर 20 के कॉम्बिनेशन को खत्म करने के लिए आपको बटन्स हटाने पड़े तो काफी सारे बटन हट जाएंगे, और 20 के अलावा भी कई नंबर्स हैं जो जनरेट नहीं हो सकेंगे, तो बटन्स आपको रखने पड़ेंगे. उसके अंदर कहीं जाके कोई मशीन के अंदर कोई फंक्शनैलिटी चेंज करनी पड़ेगी. लेट्स से हाइपोथेटिकली थिंक कर रहे हैं, लेट्स से व्हाट विल यू डू? अगर आपने करना हो तो कैसे करेंगे?
या यूं कह लें, आपसे बादशाह कहता है, बादशाह हाजिर वक्त आपसे कहता है f(20) की वैल्यू बताओ, वरना वरना सजाए मौत। ठीक है, क्या करेंगे? सजाए मौत। सो एक तो पॉसिबिलिटी है सजाए मौत, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या, बादशाह से कहते हैं कि सर बात सुने, ये आप जिसको भी कहेंगे वो बेचारा मरता जाएगा, f(20) पॉसिबल नहीं है। सही है। जी सर। तो अब बादशाह अपना सवाल चेंज करता है, टेल मी समथिंग very near to f(20) if f(20) is not possible। अब आप क्या करेंगे? सर पॉइंट में बता देंगे। क्या करेंगे? क्या 1/20 माइनस क्या करेंगे? सर 19 सर पॉइंट क्या सर 19.9 कर देंगे, वो अगर राउंड ऑफ करके 20 हो जाए। राउंड ऑफ ना करें ना, राउंड ऑफ ना करें, कौन कह रहा है राउंड ऑफ करें? राउंड ऑफ करेंगे फिर तो आप अपनी मौत को आवाज दे रहे हैं। सर राउंड ऑफ नहीं करेंगे ना, हम 19.9 लिख देंगे। 19.9 लिखते हैं, यस सर। ओके। फर्ज करें बादशाह ने ये सवाल जो है वो 10 मुख्तलिफ लोगों को दिया हुआ है, और जो सबसे क्लोजेस्ट आंसर लेके आएगा वो बचेगा, बाकी मार दिए जाएंगे। अब सर बादशाह को ही मार देना चाहिए। फर्ज करें वो नहीं मर रहा ना, वो बादशाह सर है फिर ना, 19.99 कर लें। 19.99 कर लें। जी जी सर। फर्ज करें एक और बंदा होगा वो ये कर लेगा, फिर आप तो गए ना। सर हम रेंज भी तो ले सकते हैं। जी सर सारे कोलैबोरेट करके एक ही आंसर ले जाएं, सारे ही बच जाएंगे। क्या करें? सारे आपस में कोलैबोरेट करके एक ही आंसर ले जाएं। कोलैबोरेट नहीं कर सकते, अलग-अलग कमरों में बैठे हुए हैं, अलग-अलग जेलों में, फोन शोन नहीं है, बादशाह का जमाना है। फर्ज करें जी, सर हम वैलिडेशन लगा देंगे कि ये क्या वाली वैल्यू, वैलिडेशन लगा देंगे कि ये वाली वैल्यू के अलावा कोई वैल्यू एक्सेप्ट ही ना करे वो। अच्छा ये देखें, ये भी एक बंदा है वैसे, ये भी तो 20 के करीब ही है ना वैल्यू, है ना? जी सर। तो कौन सी वैल्यू लगाएंगे? 20 पे ये फंक्शन ऑपरेट नहीं करता, 20 के करीब कोई वैल्यू उठा के इस फंक्शन को ऑपरेट देखना है कि ये किस पे ऑपरेट करता है। अब 20 के करीब कौन सी वैल्यू उठाएं? मेरी बात समझ रहे हैं? जी सर। तो मैथमेटिशियंस उसको ऐसे लिखते हैं, यानी अगर आप मैथमेटिशियंस होते हैं ना तो आप ऐसे कहते, दैट्स अ नंबर y वेयर y is as close to 20 as possible। मेक सेंस? जी सर समझ आ गई। सर बात तो अभी भी वहीं पर ही है कि अगर जैसे आपने ये सिनेरियो क्रिएट किया था कि एक बंदा 19.9 एंटर कर देता है, एक 19.999 एंटर कर देता है, एक 20.00 ऐसे समथिंग, तो दैट्स द अभी भी पॉइंट, दैट्स द पॉइंट। जब आप लिमिट यूज करते हैं देन यू डू नॉट यूज अ नंबर, यू यूज समथिंग that is closest to 20 such that between 20 and that number there is no other number। Let's say there is no other number closest to 20 other than y,
You cannot figure out that number. You cannot write that number in points form. The only way to write that number is to describe that number. You cannot write that number. आप सिर्फ वो नंबर लफ्जों में बयान कर सकते हैं कि यार वो ऐसा नंबर है जो 20 के करीब 3 है. वो 20 नहीं है लेकिन 20 के करीब 3 है. So y tends to 20 means y is not 20, but there is no other number that is closest to 20 than y. अब ये नंबर लिखा नहीं जा सकता अगर आप नंबरों में उसको लिखना शुरू कर दें. ये डिस्क्राइब ही किया जा सकता है, ये बोला ही जा सकता है जुमले की सूरत में. तो मैथमेटिशियंस ने उस जुमले को इस तरह से बोलना शुरू कर दिया. ठीक है. जैसा बादशाह वैसी अवाम. सॉरी सर, जैसा बादशाह का क्वेश्चन था वैसा ही उसकी अवाम ने उसे जवाब दे दिया. कंफ्यूजन वाला. और ये नहीं, कंफ्यूजन नहीं है इसमें, ये बड़ा क्रिस्प जवाब है. देखें, अगर बादशाह एक नंबर ऐसा ढूंढ रहा है जो नंबर 20 के करीब 3 है, तो आप कोई भी रियल नंबर लेके आ जाएं, आप लिख दें उसको, उससे भी करीब 3 नंबर लिखा जा सकता है. उसके एंड पे 2 0 और एक 1 और लगा दें, या उसके स्टार्ट में 2 0 लगा दें, 0.00, वो बन जाएगा. समझ आ रही है? जी सर. मिसाल के तौर पे आप दुनिया का कोई भी नंबर ले आए, 19 पॉइंट, ये कोई नंबर है और आपका क्लेम ये है कि ये दुनिया का, ये वो नंबर है जो 20 के करीब 3 है, ये आपका क्लेम है. तो मैं इस नंबर और पॉइंट के दरमियान, यानी 19 पॉइंट, ये जो आगे वाला पोर्शन है, इसके दरमियान यहां पे 0 ऐड कर दूंगा तो ये ज्यादा करीब है. समझ आ रही है? जी सर. तो ये नंबर लिखा ही नहीं जा सकता. ये बादशाह को बताना कैसे है, ये वो बताने का तरीका है. सही है? जी सर. ओके. अब जरा गौर से एक और चीज देखिएगा लिमिट के बाद. सो लिमिट जब लिखा हो तो घबराने की जरूरत नहीं है. ये एक ऐसा नंबर है जो करीब 3 है, इक्वल नहीं है, करीब 3 है, और इस नंबर को नंबर की फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता, इसको सिर्फ डिस्क्राइब ही किया जा सकता है. यस? ओके सर. अच्छा, एक और भी चीज देख लीजिएगा. 2 मिनट रह गए हैं, लेकिन लेट मी जस्ट फिनिश दिस लिमिट टॉपिक, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. वन मोर थिंग. देखें, 0/0, इसका जवाब क्या है जी? अनडिफाइंड. एक्चुअली इट इज टोल्ड दैट 0 0 के साथ कैंसिल आउट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 0 के साथ कैंसिल आउट हो जाए या 0/0 का कोई जवाब आ जाए, लेट्स से 7, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर 0/0 का जवाब 7 है, तो इसका मतलब है कि अच्छा 7 को 0 से मल्टीप्लाई करूं तो 0 आ जाता है, तो जवाब तो आ जाता है. लेकिन मैं तो अगर 5 को भी 0 से मल्टीप्लाई करूं तब भी 0 आ जाएगा, तो फिर 0/0 का जवाब 5 भी होना चाहिए, 0/0 का जवाब 7 भी होना चाहिए, 17 भी होना चाहिए, 170 भी होना चाहिए. यस? सो 0 को 0 से कैंसिल आउट नहीं किया जा सकता. दैट्स अ रूल बिकॉज द आंसर इज नॉट यूनिक. क्लियर है? सर 0/0 का आंसर 0 क्यों नहीं हो सकता? 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है. ये सारे आंसर्स हैं, दुनिया का हर नंबर जवाब है. 0/0 का आंसर क्या है? एवरीथिंग. क्योंकि उस एवरीथिंग को आप 0 से मल्टीप्लाई करें, यू गेट 0 बैक. ओके सर. सो इसके जवाब को इसलिए कहते हैं अनडिटर्मिनेट. अनडिटर्मिनेट. एनीवेज, सो इसका मतलब ये हुआ कि x -1 स्क्वायर over x -1 when x is equal to 1, this is not possible. Undefined. Yes? Or indeterminate, whatever.
अजान हो ले फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ मसीद। Okay, so just to wrap up, x minus 1 square or x minus 1, this ratio cannot be computed when x is exactly 1. Yes, agreed with that? जी सर। जी सर। Because 0 cannot be cancelled out with 0. I mean, and the numerator and denominator both are becoming 0. But there is a workaround. If you cannot do it with 1, you can do it with something very close to 1. So in that case, we will say, okay, limit x tends to 1. अब ये जो x tends to 1 है, इसका मतलब है कि x 1 नहीं है, लेकिन 1 के करीब तरीन कोई चीज है। Make sense? जी सर। ओके, अगर x एग्जैक्टली 1 नहीं है तो इसका मतलब है कि x माइनस 1 स्क्वायर, जिसको मैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 कह रहा हूं, ओवर x माइनस 1, वेर यू से ओके लिमिट x टेंड्स टू 1, यानी आप कह रहे हैं कि x इज समथिंग वेरी क्लोज टू 1। इसका मतलब है कि x माइनस 1 इज समथिंग वेरी क्लोज टू 0, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली 0। यस जी सर। सर अगर हम इक्वेशन को पहले सॉल्व कर ले फिर भी आंसर 0 आ सकता है, अगर इक्वेशन सॉल्व करके उसमें वैल्यू पुट करें तो। बेटे कैसे सॉल्व करेंगे? x माइनस 1 x सर माइनस 1 ऐसे ही लिखेंगे ना, ऐसे ही लिखेंगे ना इक्वेशन को। जी सर। और अब आप बड़ा मासूमियत से इसको इसके साथ काट देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। अगर x की वैल्यू 1 हो तो ये कटिंग पॉसिबल नहीं है। ये ओके कटिंग सर। एम ये कटिंग एम नहीं ना कर देते, पहले देखते हैं x की वैल्यू क्या है। ठीक है? ओके सर। ओके, सो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर x माइनस 1, अगर तो x की वैल्यू एग्जैक्टली 1 है तो फिर तो ये पॉसिबल ही नहीं है। लेट्स से कि वी वांट टू डू आवर बेस्ट, अगर x की वैल्यू 1 के करीब तरीन हो। अब अगर x की वैल्यू 1 के करीब तरीन है तो x माइनस 1 जो है ना, ये 0 के करीब तरीन है, लेकिन ये 0 नहीं है। समझ आ रही है? जी सर। ये जी कोई सर। नंबर है जो 0 के करीब तरीन है लेकिन 0 नहीं है। चूंकि ये 0 नहीं है और ये नंबर है, तो ये तो अपने साथ कैंसिल आउट हो सकता है। 0 ही कैंसिल आउट नहीं ना हो सकता, दैट्स अ प्रॉब्लम विद 0, but not with something other than 0. So now you can cancel these out, and the result is x minus 1, where limit is x tends to 1. That's the result. Now you can do this cancellation just because of the limit. अगर लिमिट ना होती तो ये कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं थी। एंड दिस इज द बेस्ट यू कैन डू। आई मीन, आपने अपनी मशीन डिजाइन करनी तो बैठे रहेंगे ओहो ये 1 पे नहीं चलता। जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है, अगर एग्जैक्ट नहीं भी हो, थोड़ा सा उसमें एरर भी हो, बट वट एवर द बेस्ट इज, गो फॉर दैट। क्लियर है? जी सर। जी सर। और इसका भी जवाब लोग इक्वल टू 0 कह देते हैं, क्योंकि x की वैल्यू 1 लगाएंगे तो 1 माइनस 1 0 है। इक्वल नहीं होता, ये भी टेंड्स टू 0 होता है। ये भी कोई नंबर है जो 0 के करीब तरीन है। यस? जी सर। चलें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक यहीं से आगे जो है वो मजीद कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ चीजें इंशाल्लाह समझ में आ गई होंगी। सर कोई बुक रिकमेंड कर दें जो हम जिसकी रीडिंग स्टार्ट कर दें, अगर हाँ जी, करनी हो। ये मैं बुक लिखने लगा हूं इधर।
मुश्किल किताब है लेकिन आप पढ़िएगा, कोशिश कीजिएगा। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स बाय CLRS। ठीक है, इसका अगर 3rd एडिशन आपको मिल जाए तो बेस्ट है। ठीक है जी। जी सर। ये किताब थोड़ी सी मुश्किल है, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। इसके अलावा एल्गोरिदम्स की किताब है बाय पापा दिमित्रियो। ये स्पेलिंग हो सकता है गलत हो, पापा दिमित्रियो। इसकी जो एल्गोरिदम्स की किताब है ये थोड़ी सी सिंपल है। तो दोनों की सॉफ्ट कॉपीज अवेलेबल होंगी, खरीदना चाहें तो खरीदें, अदरवाइज सॉफ्ट कॉपीज लेके उसी से पढ़ सकते हैं। ठीक है जी सर। ओके, एनीथिंग एल्स? सर हमारी इस कोर्स की लैब्स भी होंगी? लैब्स बेटे अगर आप ऑनलाइन, मैं तो कोडिंग कोशिश करूंगा कि जो जो एल्गोरिदम आपको पढ़ाऊं उसकी कोडिंग पाइथन में करता चलो। लैब्स अगर यहाँ पे ओपन हो जाती है यूनिवर्सिटी अगर बिलफर्स, तो फिर लैब का कोई कर सकते हैं। नॉर्मली तो इसमें लैब्स नहीं होती, लेकिन आई रियली लाइक कि लैब्स होनी चाहिए। लोगों को कोडिंग करके तो रनिंग टाइम नोट करने चाहिए। तो विल ट्राई माय बेस्ट कि जो एल्गोरिदम्स मैं आपको पढ़ाऊंगा उसकी मैं प्रॉपर आपको कोडिंग करके दिखाऊं, बट लैब्स शुड बी देयर। सो वी विल सी इफ यूनिवर्सिटी ओपन्स इन दिस सेमेस्टर। अगर ऐसा है तो फिर हम लैब्स का भी कोई ऑफ एंड ऑन, रेगुलर नहीं तो ऑफ एंड ऑन कोई 1-2 लैब्स रख लेंगे पूरे कोर्स के अंदर। ठीक है ओके सर। जी सर। सर काइंडली ना वो, हेलो जी जी बताएं। सर, काइंडली ना पाइथन की जगह पे क्या हम सी कर सकते हैं, क्योंकि हम कर उससे सकते हैं, पाइथन कर से सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ जी सी कर सकते हैं। C++ में सिर्फ ये छोटे मोटे काम करने के लिए काफी ज्यादा कोडिंग करनी पड़ेगी आपको। बिल्कुल कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर सकते हैं। पाइथन में जरा जल्दी से हो जाता काम, जल्दी से मुराद के थोड़ा कोड लिखें और ज्यादा काम हो जाता है। C++ में काफी ज्यादा कोड लिख के तो काम करना पड़ेगा आपको। पाइथन हमने सीखी नहीं है ना, कोई कोर्स नहीं पढ़ा जिसमें ये हमने इसको किया हो थोड़ा सा भी। जी सर हाँ बिल्कुल। C++ में कर लें, C++ में कर लें, जावा C++, जो मर्जी है। जी पाइथन सर। सिंपल होगी आपके लिए, इसलिए मैंने वैसे पाइथन का लिंक भी लास्ट टाइम आपको दिया था। मेरे अपने वीडियो लेक्चर्स पढ़े हुए पाइथन के ऊपर। पाइथन सिंपल होगी, अगर पाइथन को सीखने पे कोई 5-6 घंटे लगा लेना जिंदगी में एक दफा, तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी आगे। जी सर। सो लेकिन पाइथन ठीक है। जी सर लेकिन पाइथन ठीक है, हम सीख भी लेंगे एक नई लैंग्वेज। जो भी लैंग्वेज आपने करनी है सिर्फ अपनी टेस्टिंग के लिए, आप जो भी मर्जी लैंग्वेज कर लें, कोई जरूरी नहीं है कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज। लेकिन मेरा मशवरा आपको ये है कि पाइथन कर लें जल्दी से, क्योंकि पाइथन जो है ना ये आसान भी है और इसकी मार्केट वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा जॉब्स पाइथन की, तो इसलिए इसको सीख लें जल्दी से, अच्छी चीज है ये। थैंक यू सर। सर काइंडली एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि जी लेक्चर्स जो है ना इंग्लिश जो है थोड़ा सा कम यानी कि यूज किया करें, तो क्योंकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते अगर आप इंग्लिश में लेक्चर डिलीवर करते हैं। हाँ वो complete। मुझे समझ आती है, वो पता क्यों नहीं क्लियर होते, वो इंग्लिश अक्सर गलत बोल देता हूँ मैं, तो इसलिए नहीं वो सर, बंदे confused रहते हैं। नहीं नहीं ये नो मुझे पता है, ये मुझे पता है, क्योंकि ये हर दफा ना ये होता ही होता है ऐसे। इंग्लिश बोलते बोलते मैं कोई ना गलत अल्फाज और गलत ग्रामर और वो सारा खराब हो नो जाता है। सर, वो सर जी ये बात आई विल ट्राई कि मैं इंशाल्लाह ना उसको उर्दू नहीं में। सर, वो ऐसे क्यों कह रहे हैं, हमें उर्दू में ज्यादा अच्छी समझ आती है इसलिए कह रहे हैं। उर्दू में ना वो कॉन्सेप्ट फिर मुकम्मल समझ आ जाती है, क्योंकि फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाती। ठीक है, आई विल ट्राई कि मैं ना यार इसको मैक्सिमम उर्दू में कन्वर्ट करूं। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत चलें शुक्रिया जी। सर। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।